Good morning, everyone. Am I audible to all? Voice test is on. Okay, Chidaman. Voice break होती. Voice break होती. Okay. Select किया. Okay, हमें question number 55 को गलत किया. Consider the following statement in the election of Lok Sabha state legislative assembly. The winning candidate must get at least 50% of the vote poll and to be declared elected according to the provision made in the constitution. In Lok Sabha, the speaker goes to the majority party and deputy speaker to the opposition party. Correct. ठीक है सर. Okay, the answer is D is your correct answer. Okay. D is your correct answer. Because here clearly the election of the Lok Sabha state legislative assembly, the winning candidate passport system. Passport system means the jar majority actually number आସୁଛି. Okay, majority number jar number ଆସିଯିବ. तो सीए winning candidate second କଥା होଉଛି according to the provision made in the constitution, the speaker goes to the majority party, deputy speaker goes to the opposition party. There would be mention generally our speaker जो हमारे majority party था सी तांकर जो speaker होती है opposition ର माइक खराब ଅଛି. एबे ठीक सुबिला. ओके आंसर डी हेजबो. ओके आंसर हमरा डी हेजबो. नेक्स्ट regarding the office of the Lok Sabha speaker, consider the following. He hold the office during the pleasure of the president. He or she need not be a member of the house at the time of his or her election.
but has to become a member within 6 months from the date of his election. If he intended to resign, the letter of his resignation given to Deputy Speaker. कोड़ा ठीक अच्छी. देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो होची लोकसभा स्पीकर जी हेबे ओके से जो हमर देची ही और शी नॉट नीड नॉट बी ए मेंबर ऑफ दैट हाउस एट द टाइम ऑफ इलेक्शन एटा रॉन्ग कारण जी लोकसभा रो जो माने मेंबर हेकी जाइथिबे इलेक्टेड तांको भितरु जणको जो स्पीकर हिसाब रे हमर इलेक्टेड करा जाय तो सी जी इलेक्टेड हेकी जाइथिबे तांको भितरु तेणु ही और शी नीड नॉट बी ए मेंबर एटा रॉन्ग he should be a member of the house at the time of his election okay तो ये जो need not कहिछि he need to be a member not नहे he need to be a member of that house at the time of his election नहले हे परिबेनी ओके तो दुई जो थिरा अछि काटी दियो ओके से थर्ड हमर होछि जदी रेजिग्नेशन हमर दियंती स्पीकर काहा को देबे डेप्यूटी स्पीकर देले काहा को देबे स्पीकर को देबे तो थर्ड हमर ठीक अछि तो ओनली 3 हिजबा हमरो करेक्ट आंसर साउंड स्लो कोन एमती हो जे सब तो ठीक अछि ओके तापरे ही होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एटा रॉन्ग अछि ओके प्रेसिडेंट जतले चाहिबे तांको बाहर करा जाय परिबो नाही तांको बाहर करिया कहले तमरा कोन ना लोकसभा रे हमर 14 डेज रो नोटिस दिया जिवो तापरे तांको स्पेशल मेजॉरिटी रे हमर रिमूव करा जिवो ओके तो एटा हमर रॉन्ग अछि बाहर करिया कहले कोन हबो ना ही रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ all then member of the house आउ से रेजिग्नेशन देले डेप्यूटी स्पीकर को तो आंसर करेक्ट आंसर कोन हेजबो ना बी हेजबो ओनली 3 हेजबो हमर करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन the speaker of the legislative assembly shall vacate his or her office if he ceases to be a member of the assembly whenever the legislative assembly is dissolved the speaker has to vacate his or her office immediately ओके आमे कोन कहले ना स्पीकर को जदी हमरो केते बेले हमरो तांकर जदी सीए मेंबर ऑफ जो पर्यंत से मेंबर अछंती तांकर स्पीकर कर ऑफिस रहइबो जदी मेंबरशिप तांकर चली जिवो ताले स्पीकर पदवी चली जिवो तो स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली shall be vacate his office if he ceases to be a member of assembly ठीक अछि सेकंड whenever the legislative assembly is dissolved जदी डिसॉल्व हेई जाउची तो इमीडिएटली से वैकेट करंती नो अनलेस अंटिल तांकर जो पर्यंत जने नुवा अपॉइंटमेंट न हेई छंती से पर्यंत से रहिबे ओके तो ओनली 1 हिजबो हमर करेक्ट आंसर मन रखिबो स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली जदी तांकर लेजिस्लेटिव असेंबली रु जदी तांकर मेंबरशिप पळेबो ताहले कारण हमर कोन कहले स्पीकर किए हेबे ना जीए ऑलरेडी जेही लोकसभा किंबा विधानसभा जे ऑलरेडी मेंबर थिबे तांको भितर जण को चूज करा जो से तो मेंबर नहंती तो हेई परिबेनी तो स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज ऑफिस जदी से मेंबर तांकर पद पळेबो जदी लोकसभा रु किंबा जो विधानसभा रो ताहले तांको स्पीकर पदवी से रहि परिबे नाही ओके तो आंसर हमरो ओनली 1 हिजबो करेक्ट आंसर ओके आउ सी जो पर्यंत हमर जने नुवा अपॉइंटमेंट हेई नाहंती से पर्यंत ये ऑफिस रे रहिबे तो आंसर ओनली 1 हिजबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूनियन टेरिटरी आर नॉट प्रेजेंटेड इन राज्य सभा it is purview of the chief election commissioner to adjudicate the election dispute according to the constitution of india parliament consists of lok sabha rajya sabha only okay तो एई भलिया क्वेश्चन ने तमे कोन करिवो एलिमिनेशन करिवो यूनियन टेरिटरी इज नॉट प्रेजेंटेड इन द राज्य सभा रॉन्ग तमरा दिल्ली पांडिचेरी जम्मू एंड काश्मीर रो हमर यूनियन टेरिटरी राज्य सभा को रिप्रेजेंटेशन अछि दिल्ली रु 3 जण पांडिचेरी रु जणे
ओके आउ जम्मू एंड काश्मीर 4 जन टोटल 8 जन जाउछंदी तो 1 टा हमर रॉन्ग अछि ओके सेकंड तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा राज्यसभा ओनली रॉन्ग काहे कि ना हमर पार्लियामेंट होची लोकसभा राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट ओके ओके ओनली जो कहिछि सेटा रॉन्ग तो लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट तो एटा भी रॉन्ग तो आंसर कौन है जीवो नॉन ऑफ दिस है जीवो तो एबे थर्ड सेकंड स्टेटमेंट देखो इट इज विद इन द पर्व्यू ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू एडजुडिकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट नो एटा हमर कोन हुए ना जुडिशियरी तमरा सुप्रीम कोर्ट हो हाई कोर्ट हो तमरा इलेक्शन डिस्प्यूट किए करे जुडिशियरी करे ओके तो आंसर कौन है नॉन ऑफ दीज है करेक्ट आंसर ओके सो डी इज द करेक्ट आंसर 59 Rajya Sabha has no power to either to reject or to amend a money bill. Rajya Sabha cannot vote on demand on grant. Rajya Sabha cannot discuss the annual financial statement. ता भितर कोटा करेक्ट पचारछि एटा जानिछ मनी बिल होछ हमर 110 आर्टिकल 110 तमर एटा केवल लोकसभा रे इंट्रोड्यूस हे परिबो राज्यसभा रे इंट्रोड्यूस हे पारे नाही राज्यसभा को जेतेबेले जीव स्पीकर सर्टिफाइड करंती इट इज मनी बिल 14 दिन भितर राज्यसभा रे कोन करिवो ना सेटा पास करिया दरकार अदरवाइज इट विल बी कंसीडर एज इट इज पास्ड बाय द राज्यसभा ओके तापर तमरा कोन ना सेटारे तेनो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक अछि राज्यसभा हैज नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और अमेंड ए मनी बिल राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड ऑन ग्रांट यस तो डिमांड ऑन ग्रांट ऊपर हमर वोट हुएनी कैन नॉट डिस्कस एटा रॉन्ग डिस्कशन करि परिबे सजेशन दे परिबे ओके किंतु रिजेक्ट करि परिबेनी कि अमेंड करि परिबे ओके तो आंसर कोन हे जबो ताले ना 1 and 2 ओनली ओके वेरी गुड समस्त आंसर ठीक अच्छी संगीता ऋतु सोनाली दिव्यरंजन संघमित्रा स्वरूप पुष्पांजलि लालानी वेरी गुड ओके समस्त आंसर हाँ तब मझे बेले बेले तुमको डाउट लगे तेणु 1 and 2 जदि तमे एलिमिनेशन करवा स्टार्ट करियो ओके तो आ भितर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेशल पावर जोटा कि राज्यसभा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कोडा हमरो स्पेशल पावर दिया है राज्यसभा को ओके राज्यसभा स्पेशल पावर to change the existing territory of the state and to change the name of the state okay or to pass the resolution empowering the parliament to make laws in the state list to create one more governance to amend the election procedure of the president to determine the function of the election commission to determine the number of election commission the special power of राज्यसभा रे हमर कोन अछि ना तमर ओटे 249 आर्टिकल 249 एथरे कोन कोहा होछि ना जदि स्टेट लिस्ट रे तमर 249 रे जदि स्टेट लिस्ट रे तमे लॉ करिवार अछि तो राज्यसभा रे ओटे रेजोल्यूशन पास कला परे स्टेट लिस्ट रे हमर पार्लियामेंट लॉ करि परिबो ओके स्टेट लिस्ट रे सेकंड कथा होछि आ ओटे कोन ना 312 रे तमे जदि ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करूछ मे बी तमरो ऑल इंडिया सर्विस को उडा ना तोर आईएएस हला आईपीएस हला इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हला तो ऑल इंडिया सर्विस ओके ऑल इंडिया सर्विस तो सही केस रे भी हमरा कोन होची ना राज्यसभा रे हमरा रेजोल्यूशन दरकार ओके तो हमरा सही अनुसार कोन टू पास ए रेजोल्यूशन एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट एंड टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विस तो ये फर्स्ट पार्ट टा होची आर्टिकल 249 ओके एंड सेकंड पार्ट ऑल इंडिया सर्विस होची हमरा 312 ओके तो एटा हमरा मने रखिबो तो आंसर कोन हे जिवो बी हे जिवो हमरा करेक्ट आंसर नेक्स्ट 61 consider the following statement with respect to the qualification to become a member of Rajya Sabha राज्यसभा मेंबर हवा पे कौन क्वालिफिकेशन तमर दरकार at least 30 years of age should be registered voter in the list on the list of voter in the state from which the candidate to be elected
should not hold any office of profit under the state कोटा हमर करेक्ट पचारि छै तो देखो राज्यसभा रो मेंबर होबा पय तमरा केते वर्ष दरकार 30 इयर्स एज ठीक अछि तापरे he should not hold an office of profit एटा ठीक अछि तो he should be registered as a voter on the list of voter in the state from which the candidate to be elected no तो देखो सी जो एबे धर्मेंद्र प्रधान हेले तो बिहार रु सपोज हमर इलेक्टेड हे कि जाउछन से कोन बिहार रो वोटर लिस्ट अछन न तो जो स्टेट रो वोटर लिस्ट रहिले भी चलेबो जो स्टेट रो हमर तमे इलेक्टेड हे कि गले चलेबो सेही स्टेट रो वोटर लिस्ट नथिले भी चलेबो तो एटा हमर 2003 रु चेंज हे जाय आगु 2003 पूर्वरु कोहा जाउथला जे तमे जो स्टेट रु जीवो से स्टेट रो वोटर लिस्ट थिया दरकार कि 2003 परठु सेटा चेंज हे जाय ओके तो एटा कितना नंबर थिला हमरो 61 नंबर तो आंसर टा जस्ट देखो तुमको तो एथरे हमरा 1 and 3 are correct prior to 6 April 2003 it is necessary that the candidate of Rajya Sabha must be enrolled in the voter list of that state 2003 6 एप्रिल पूर्वरु एई भलिया प्रोविजन थिला किंतु ता परे गोटे अमेंडमेंट आनी कि कहला जे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट रे तो एटा रिमूव करा गला तमे जो स्टेट रु रहले भी हमरो चलिबो ओके तो आंसर कौन हबो ना 1 and 3 होचे हमरा करेक्ट ओके 62 joint sitting of both house of the parliament is sanctioned under article 108 of the constitution first joint sitting of lok sabha and rajya sabha have held in 1961 second joint sitting of both house of the indian parliament held to pass banking service commission bill ता भीतर कोडा ठीक अछि 62 ओके तमे जानिछ जॉइंट सिटिंग हमर कोन होची ना तमरो 108 रे मेंशन अछि तो ए जॉइंट सिटिंग किए डाकंती प्रेसिडेंट डाकंती ओके क्वेश्चन पडितला हमर ओपीएससी प्रीलिम रे किए डाकंती ना प्रेसिडेंट डाकंती एटा को किए चेयर करंती ना जॉइंट सिटिंग टा को चेयर करंती बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा स्पीकर ऑफ लोकसभा हमर एटा को ओके जॉइंट सिटिंग टा को हेड करंती आ जॉइंट सिटिंग रे जो को बिल केस रे हमर जॉइंट सिटिंग टा हमर केवल डका जाई परिबो तमे जानि छ जे केवल ऑर्डिनरी बिल केस रे हे पारे ऑर्डिनरी बिल केस रे हमर हबो मनी बिल केस रे त हमर जॉइंट सिटिंग रे चांस ही नहीं कारण लोकसभा रे सिंपल मेजॉरिटी पास हे गले मनी बिल पास हे गला आ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तो ईच हाउस रे हमर स्पेशल मेजॉरिटी पास होगा दरकार तो केवल ऑर्डिनरी बिल केस रे ही हमर जॉइंट सिटिंग डका हुए एटा प्रेसिडेंट डाकंती स्पीकर एटा को चेयर करंती ओके 108 होचे हमर अमेंडमेंट 108 होचे आर्टिकल हमर जोटा के होचे जॉइंट सिटिंग ओके सो जॉइंट सिटिंग हमर आंसर एटा ठीक अछि सेकंड हमर स्टेटमेंट भी ठीक अछि फर्स्ट जॉइंट सिटिंग ता 1961 रे आस्तला तापर सेकंड जॉइंट सिटिंग ता हमर पास ऑन बैंकिंग सर्विस ऊपर हमर आस्तला तो तीनटा को तो इथे देखि दबो तो जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट 108 हमर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया लिखा है फर्स्ट जॉइंट सिटिंग 1961 टू रिजॉल्व द इश्यू ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन बिल ओके सेकंड जोटा कि हमर बैंकिंग सर्विस रही छी थर्ड जॉइंट सिटिंग ता हमर एंटी टेररिज्म प्रोहिबिशन ऑफ एंटी टेररिज्म बिल जोटा कि पोटा हमें कहले ओके तो तीनटा हमर जॉइंट सिटिंग हमें देखिले Next, the dialogue between Lok Sabha and Rajya Sabha call for a joint sitting of the Parliament during the passage of तुम कहि दिली एबे तो को केस रे क्वेश्चन ता डायरेक्टली माने पडिथिला तमरो ओपीएससी प्रीलिम रे को केस रे तमरो जॉइंट सिटिंग अवेलेबल थाए ना केवल ऑर्डिनरी बिल केस रे ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन केस रे तमरो जॉइंट सिटिंग थाए
मनी बिल केस न थाए किंबा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल केस न थाए तो कौन हम हमर करेक्ट आंसर ना ए हे जो हमर करेक्ट आंसर ओनली 1 ओके ओनली 1 हे जो हमर करेक्ट आंसर okay next question with reference to the Parliament of India consider the following statement. A private member bill is a bill presented by a member of the parliament who is not elected, not nominated by the president of India. এটা wrong ଅଛି କାହିଁକି private member ମାନେ କିଏ ନା other than minister ଯଦି minister ଛଡା ଆଉ କିଏ ବି ଗୋଟେ bill ଆମର presented କରୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆମେ private member bill ବୋଲି କହିବା ତ ଏଠି ନୁହଁ ସେ elected ହୁଅନ୍ତୁ nominated ହୁଅନ୍ତୁ କିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ minister ଛଡା किए भी जदि आमर गोटे बिल इंट्रोड्यूस करछन से होछन प्राइवेट मेंबर ओके नेक्स्ट तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग अछि सेकंड हैला रिसेंटली प्राइवेट मेंबर बिल इज पास्ड इन द पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री तो एटा भी हमर रॉन्ग अछि काहे कि बहुत गुडे ता पूर्व माने 10 12 टा पाखा कि हमर प्राइवेट मेंबर बिल ता पूर्व हमर ऑलरेडी हेछि हेमति नै ओके तो बोथ स्टेटमेंट हमर होछि रॉन्ग अछि ओके तो आंसर कौन हम ना नाइदर हे नाइदर 1 नॉर 2 ओके $65 A bill pending in Lok Sabha lapses on its prorogation. A bill pending in Rajya Sabha which has not been passed by Lok Sabha shall not lapse on dissolution of the Lok Sabha. कौन आमर हवा करेक्ट आंसर एटा आमर बी हे करेक्ट आंसर ओके ओनली 2 काहे ता गोटे बिल पेंडिंग ऑन लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन ने प्रोरोगेशन ने हमर लैप्स करेनी धर गोटे बिलटा पेंडिंग हे के अछि जदि डिजॉल्व हे गला लोकसभा ताले प्रोरोगेशन माने कोन टेम्पररी पे तमर धर ए सेशन सरीला त सेतले बंद सपोज हमर हला एबे सपोज मानसून सेशन सरीला सपोज तो मानसून सेशन सरला पर बंद हो तापर विंटर सेशन ने खुला हो तो बिलटा प्रोरोगेशन ने लैप्स हुए नहीं डिजोल्यूशन ने लैप्स हुए ये प्रोरोगेशन बदल रे हमर जदी डिजॉल्व हे जिवो ओके ताहले हमर एटा हमर कोन ना लैप्स हे जिवो ओके तो गोटे बिल पेंडिंग इन राज्यसभा व्हिच हैज नॉट पास्ड बाय लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन द डिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा ठीक अछि ओके सपोज गोटे हमर लोकसभा रे राज्यसभा रे पेंडिंग हे के अछि किंतु लोकसभा रे बिल्कुल सेटा इंट्रोड्यूस हेइनी ओके पास हेइनी तो सपोज लोकसभा एथि हमर डिजॉल्व हे गेला तो ता बोली कोन एटा हमर लैप्स हे जिवो नो तो राज्यसभा रे जदी पेंडिंग हे के अछि जदी लोकसभा रे सेटा इंट्रोड्यूस हेइनी ओके ताहले लोकसभा जदी भांगी गला तो किछि असुविधा नै तो जो नुवा लोकसभा सी सेटा पास करिवो तो सेटा हमर डिजॉल्व जो लोकसभा डिजॉल्व हे गले भी जदी इंट्रोड्यूस हे नथिबो से बिलटा तो लैप्स होइनी ओके ओके तो एटा हमर आंसर कोन हेजबो ना ओनली 2 हेजबो नेक्स्ट क्वेश्चन द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ Rajya Sabha are not the member of that house while a nominated member of both house of the parliament have no voting right in the president election they have right to vote in the election of the vice president कौन हवा करेक्ट आंसर देखो चेयरमैन ऑफ राज्य सभा किए ना तुम जानि छ भाइस प्रेसिडेंट तो भाइस प्रेसिडेंट कौन से राज्यसभा मेंबर की नो तो ये जो हमारा कहा होची चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन आर नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस तो चेयरमैन तार मेंबर नुहंती किंतु डेप्यूटी चेयरमैन जी हेबे की हेबे राज्यसभा जो माने
मेंबर हे कि जाइथिबे तांको भितर जने डेप्यूटी चेयरमैन तो बोथ जो आर नॉट मेंबर ऑफ दैट हाउस एटा रॉन्ग अछि डेप्यूटी चेयरमैन शुड बी ए मेंबर ऑफ दैट हाउस ओके डेप्यूटी चेयरमैन शुड बी ए मेंबर ऑफ दैट हाउस ओके तो ये स्टेटमेंट हमर रॉन्ग अछि ओके डेप्यूटी चेयरमैन शुड बी ए मेंबर ऑफ दैट हाउस चेयरमैन शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ राज्यसभा ओके से तो जन इंडिपेंडेंट मेंबर ठिया हुअंती आउ तांको किए वोट दियंती ना बोथ हमर पार्लियामेंट रो लोकसभा राज्यसभा रो बोथ इलेक्टेड आउ नॉमिनेटेड मेंबर समस्त वोट देबे तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक अछि nominated member of both house of the parliament have no voting right in the president election रे हमर केवल इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रो इलेक्टेड मेंबर माने केवल वोट दियंती ओके एथिरे कोनसी नॉमिनेटेड मेंबर माने कर किछि रोल नाही ओके किंतु आमर कोन होची ना तमरो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन ने बोथ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ ऑल माने मेंबर जो माने रहिले लोकसभा राज्यसभा से माने पार्टिसिपेट करंती सो वाइस प्रेसिडेंट रे द राइट टू वोट द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड मेंबर माने थांती ओके तो आंसर कोन हेजबा ना ओनली 2 हेजबा हमरो करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट होची with reference to the union government consider the following statement department of revenue is responsible for preparation of a union budget that is presented to parliament no amount can be withdrawn from the consolidated fund of india without authorization from the parliament all the disbursement made from the public account need to be authorization from parliament of india कौन हमारा आंसर ओके सागरिका 2 ओम ओनली 2 संगीता ओनली 2 करेक्ट ओके बंशीधर पूजा ओके वेरी गुड देखो प्रथमता होची मते कुह डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नुह जदी करेक्ट आंसर कोन हबो जदी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज नॉट रेस्पोंसिबल नुहे ताहले कि ना डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर मन रखिथिबो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ओके डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ओके तो ये होची हमर कोन responsible for the preparation of the budget तो आंसर हमरा फर्स्ट स्टेटमेंट हमरा भूल अछि ओके सेकंड तमरा no amount can be withdrawn from the consolidated fund of india without authorization from the parliament ठीक अछि तो consolidated fund of india रे पैसा उठिया को हेले तो definitely ଆମର authorization of the parliament दरकार so without authorization of the parliament you cannot withdraw the money from the consolidated fund of india तो second statement ଆମର ठीक अछि केवल ଆମର को केस रे दरकार नहीं जोडा को चार्ज एक्सेप्ट जोडा चार्ज एक्सपेंडिचर थाए जेमति के प्रेसिडेंट कर सैलरी हेले जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रो सैलरी अलाउंस हला किंबा हाई कोर्ट मानकर पेंशन हला तो जोडा को चार्ज एक्सपेंडिचर that is not needed to तमरा not subjected to the vote of parliament तार authorization दरकार नहीं किंतु तमरा अन्य गुडा को जोडा को रहिला तो से गुडा का हमरा कोन होची ना तमरा authorization दरकार ओके तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक अछि जे नो अमाउंट कैन विथड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट ऑथराइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट एटा ठीक अछि ओके तमे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किछि पैसा उठिया पले हमको ऑथराइजेशन दरकार थर्ड स्टेटमेंट कोन ना ऑल द डिसबर्समेंट मेड फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट आल्सो नीड ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एटा रॉन्ग अछि ओके पब्लिक अकाउंट हमें तीनटा अकाउंट कहिथिले गोटे हला पब्लिक अकाउंट गोटे हला कंटीजेंसी फंड आ गोटे हला हमर कोन कंसोलिडेटेड फंड पब्लिक अकाउंट रु जतले पैसा उठा हुए सेटा एग्जीक्यूटिव मानक हाथ रे थाए माने तमर कैबिनेट मिनिस्टर जदी और कैबिनेट काउंसिल मिनिस्टर जदी माने ऑर्डर दे दिले तो सेथु तम पैसा उठे परिबो
ओके तो पब्लिक अकाउंट रु माने कौन ना तुम जदि पैसा उठेगा चाहो ऑथराइजेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव दरकार ओके तो तीनटा अकाउंट तेणु मन रखिबो गोटे हला हमर कंसोलिडेटेड फंड ओके आ गोटे हला कंटीजेंसी आ पई कोन दरकार ना पार्लियामेंट रो अप्रूवल दरकार ओके तापर हला कंटीजेंसी फंड रो पैसा उठेया कले कहार अप्रूवल दरकार ना प्रेसिडेंट कर अप्रूवल दरकार ओके तापर हला हमर कोन ना पब्लिक अकाउंट रो उठेया कले कोन ना एग्जीक्यूटिव और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तमरो दरकार ओके तो हमर कोन हबो ना ताले आंसर ना 2 and 3 हिजबो करेक्ट आंसर ओके मते कहिलो कंसोलिडेटेड फंड केत नंबर आर्टिकल अछि कंटीजेंसी फंड केत नंबर आर्टिकल आउ पब्लिक अकाउंट केत नंबर आर्टिकल अछि आर्टिकल को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया केत नंबर आर्टिकल अछि आ कंटीजेंसी फंड रे टोटल वर्तमान केते टंका जाए हमर तार कैपेसिटी केतना कंटीजेंसी फंड आगु हमर फास्ट थिला 500 करोड़ तापर एटा बढ़ी के हला हमर केते 3000 करोड़ ओके तापर एटा बढ़ी की वर्तमान केते हेची 3000 करोड़ तापर एटा 30000 कोटी हमर वर्तमान अछि कंटीजेंसी फंड रे ओके ओके सो कंसोलिडेटेड फंड मन रखिबो केते 266 पब्लिक अकाउंट 266 आउ कंटीजेंसी हला हमर 267 ओके मन रखि दियो बेले बेले परीक्षा रे पड़ी जाउची ओके एंड टोटल हमर होची 500 रु हमर 3000 कोटी रे 30000 कोटी टोटल हमर ओके कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया रो कैपेसिटी नेक्स्ट क्वेश्चन 68 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मनी बिल इज नॉट करेक्ट नॉट पचारि ओके जोठी नॉट पचारि तमे कोन करिवो इमीडिएटली गोल बुलियो परीक्षा रे माइंड रे रहिबो जे नॉट पचारि ओके तो a money bill can either table in the house of the parliament either house of the parliament is wrong kahi ki ना मनी बिल टा कोठी इंट्रोड्यूस हे परिबो ना केवल लोकसभा रे फाइनल अथॉरिटी मनी बिल whether a bill is money bill or not it is decided by speaker second statement ठीक अछि the speaker of the lok sabha is the final authority to decide whether a bill is money bill or not okay third statement the rajya sabha must return a money bill passed by the lok sabha and send it for consideration within 14 days ठीक अछि 14 दिन भीतर राज्य सभा सेटा फेरेइबो अदरवाइज इट विल बी कंसीडर एज ऑटोमेटिकली पास बाय राज्य सभा ओके तापर हमरा कोन the president cannot return a money bill to the lok sabha for reconsideration yes president हमर money bill को reconsideration पय पठै परिबेनी either approve करिवे or withhold करिकि रखिबे तो हमर कोन होछि ना एटा ठीक अछि तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमर रॉन्ग अछि फर्स्ट स्टेटमेंट हमर रॉन्ग अछि ओके नेक्स्ट होछि 69 what is the difference between vote on account interim budget सिक्सटी नाइन कौन हम ओके तो देखो vote on account is used by stable government while interim government is a provision used by caretaker government wrong दीटा का तमरा रेगुलर गवर्नमेंट हमर करंती vote on account हमर कोन ना सपोज तमरा गोटे चलिया पय ई फाइनेंशियल ईयर पय सपोज मु कहबी जे
1 लाख करोड़ दिया जाइए ओके किंतु तुम सर्टेज पड़गला तुमको आउ कौन ना 40,000 करोड़ एक्स्ट्रा दरकार ओके तो से जो मु कहली जे एक्स्ट्रा जो दरकार से भोट ऑफ आमर अकाउंट रे एक्स्ट्रा जो आमर एक्सपेंडिचर दरकार सेटा तमर निया जा इंटरिम बजेटटा कौन ना धर तमर होची नुआ इलेक्शन होची तो नुआ इलेक्शन हेले तुमको सपोज 3 मास 4 मास पई सपोज एबे परे आ इलेक्शन सपोज आसुची तो इलेक्शन हबार अछि तो सेही केस रे तमर से 3-4 मास पई जो हमर कुहा होची बजेट आसुची ओके फुल ईयर बजेट न एटा इंटरिम बजेट माने 3-4 मास पई तमर केते जो रेवेन्यू आसुची एक्सपेंडिचर तार हमर कोचे तो एटा इंटरिम बजेट तो फास्ट हमर दीटा को एटा केयरटेकर गवर्नमेंट पई सेटा हमर स्टेबल एमिति नै दीटा का स्टेबल गवर्नमेंट पई ही हमर थाए ओके रेगुलर गवर्नमेंट पई थाए सेकंड स्टेटमेंट ठीक अछि vote on account only deals with the expenditure in the government budget while interim budget include both expenditure and receipt तो आंसर हमर कोन होची ओके तो एटा हमर आंसर होची कोन ना only 2 हे जबो हमर करेक्ट आंसर ओके only 2 हे जबो हमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट The chairman of the Committee on Public Account is appointed by Speaker of the Lok Sabha. Committee on Public Account comprise the member of Lok Sabha, member of Rajya Sabha and few eminent person from the industry and trade. Okay. तो कौन हवा आंसर आरो ना तुम जानि छ जे चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ लोक सभा यस पब्लिक अकाउंट रो चेयरमैन को हमर की अपॉइंटमेंट करंती ना स्पीकर ऑफ लोक सभा हमर अपॉइंटमेंट करंती ओके आउ एथिरे टोटल ए पीएससी जो पब्लिक अकाउंट कमिटी हमें कहूचे ए पब्लिक अकाउंट कमिटी रे 22 जन मेंबर थांती 22 जन मेंबर रु हमर कोन ना 15 जन हमर लोक सभा रो 15 जन हमर लोक सभा रो आउ 7 जन हमर कोन थांती ना राज्यसभा ओके मन रखियो तो जो पब्लिक अकाउंट कमिटी टा जो हमें कहूचे तो तार चेयरमैन को हमर स्पीकर ऑफ लोकसभा हमर अपॉइंटमेंट करंती 22 जन मेंबर रु 15 जन लोकसभा और 7 जन हमर राज्यसभा रु तापरे तमर ये कार रिपोर्ट टा को एग्जामिन करे हमें काली डिस्कशन करितले जे सीएजी जो रिपोर्ट टा दबो सीएजी रिपोर्ट दबो प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट एटा पार्लियामेंट रखिबे डिस्कशन डिबेट पाई तापरे पार्लियामेंट पठेबेटा पब्लिक अकाउंट कमिटी को पब्लिक अकाउंट कमिटी एग्जामिन करिबो ए सीएजी रो रिपोर्ट टा ओके तो कौन है ताला आंसर ना 1 ओनली हिजबो हमरो आंसर ओके तो आउट क्वेश्चन हमर परीक्षा रे पड़े जे हमर जो पार्लियामेंटरी कमिटी अछि सब को कमिटी रो मैक्सिमम मेंबर थांती क्वेश्चन हैला तो आउट ऑफ जत्ते की पार्लियामेंटरी कमिटी अछंती व्हिच कमिटी हैज मैक्सिमम नंबर सेकंड क्वेश्चन हैला जो पार्लियामेंटरी कमिटी अच्छी को पार्लियामेंटरी कमिटी रे ओनली हमर लोकसभा रे मेंबर थांती ओनली लोकसभा रे मेंबर थांती नो राज्यसभा मेंबर सेथे प्रेजेंट न थांती एस्टिमेट कमिटी वेरी गुड एस्टिमेट कमिटी मैक्सिमम केते ना 30 जन मेंबर थांती आ 30 जन जाक कोड थांती 30 जन जाक हमर ओके 30 जन जाक हमर कोड थांती ना लोकसभा रो मेंबर ही थांती एस्टिमेट कमिटी 30 जन मेंबर थांती और 30 जन जाक हमर ओके लोकसभा रो हमर थांती ओके तो एटा तमे माने रखिबो नेक्स्ट क्वेश्चन पार्लियामेंटरी पब्लिक अकाउंट ऊपर पचारि छी इट इज कंसिस्टिंग नॉट मोर देन 25 member of Lok Sabha scrutinize the appropriation and finance account of the government examine the report of the controller and auditor already हम डिस्कशन कर देछे पब्लिक अकाउंट कमिटी टोटल केते जन मेंबर थांती ना 22 जन मेंबर थांती 25 नुहे 22 ए 22 रु हमें 15 और 7 कहले 15 लोकसभा रो ओके एंड
7 जन आम राज्यसभा ओके 7 जन आम राज्यसभा ये कौन करे पब्लिक अकाउंट कमिटी जो आम कहले सीएजी रिपोर्टा दब प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट पार्लियामेंट रखिए पार्लियामेंट पठेब आमर पब्लिक अकाउंट कमिटी को पब्लिक अकाउंट कमिटी कौन करिवो ना एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया तो से सी जो अप्रोप्रिएशन ऑफ फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट सेटा को स्क्रूटिनाइज करिवो तो आंसर कौन हिजबो ताले 2 and 3 हिजबो हमरो करेक्ट आंसर ओके सो 2 and 3 हिजबो हमरो करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट 72 Which one of the following statement is or are correct regarding the maternity benefit act 2017 तो maternity benefit act 2017 रे कोड हमरो correct the pregnant women are entitled for 3 months pre-delivery or 3 months post-delivery paid leave so enterprises with crèche must allow the mother minimum 6 crèche facilities daily women with 2 children get ओके तो देख ये आमर कौन हो मैटरनल बेनिफिट लीव रे आमर कौन ना तुमर जोटा 12 वीक थिला 26 वीक पर्यंत पेड लीव 26 वीक पर्यंत आमर पेड लीव दिया जाय ओके एटा गोटे लेखा नहीं कि क्रेज फैसिलिटी जो रहिबो मिनिमम 6 क्रेज विजिट डेली एटा लेखा नहीं तमरा 2 दीटा चिल्ड्रन जाय तमरा ए जो एटा हमरा कोन होची ना एंटाइटल हमरा दीटा चिल्ड्रन जाय हमरा नै परिबो एटा हमरा ठीक अछि तो ओनली 3 हिजबो तार एक्सप्लेनेशन ना जस्ट तुमको देखि दोछि ओके तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो असला 2017 रे तो ए एक्ट अनुसार दिस एक्ट एक्सटेंडेड ए पीरियड ऑफ मैटरनल बेनिफिट जोटा कि हमरा 12 वीक थिला एबे 26 वीक of which not more than 8 weeks can be preceded the date of expected delivery. So first statement our wrong achi. The act provided maximum period entitled for maternal benefit women having 2 or more than 2 surviving children shall be 12 weeks which not be less than 6 week amar hela the third statement be correct achi maternal leave amar 12 weeks available for mother adopting a child below the age of 3 months from the date of adoption okay tenu amar allow 4 visit not amar 6 visit ne 4 visit okay तो এটা আমরা 4 ভিজিট ডেইলি তোমরা अलाउ Next question 73 with provision to safeguard the autonomy of Supreme Court. Supreme Court रो autonomy ପାଇଁ को स्टेट माने गुडा को हमें तार प्रोविजन कोन अछि Now while appointing the judge of the Supreme Court president has to consult the Chief Justice of India ठीक अछि तो अपॉइंटमेंट सिना प्रेसिडेंट करंती किंतु कंसल्ट करंती कहा को चीफ जस्टिस तो चीफ जस्टिस आउ तांकर कॉलेजियम सिस्टम तो सी जो हा को हमरो रिकमेंडेशन देथिबे जार ना तो ई कॉलेजियम सिस्टम रे केते जन रहिबे ना सीजीआई रहिबे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई ओके प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज रहिबे ओके तो ए कॉलेजियम सिस्टम जा ना रिकमेंड करिवे प्रेसिडेंट ताको अपॉइंटमेंट करिवे और कंडीशन कोन हमें काली पढिथिले से जने सिटीजन ऑफ इंडिया हेथिबे 10 वर्ष हाई कोर्ट रो एडवोकेट किबा 5 वर्ष हाई कोर्ट रो जज हिसाब रे काम करथिबे इमिनेंट जूरिस्ट हेथिबे ओके तो ए कंडीशन रे हमरो कॉलेजियम सिस्टम ताको रिकमेंड कले प्रेसिडेंट ताको अपॉइंटमेंट देबे okay second the judge of the Supreme Court can be removed by the Chief Justice of India only wrong तमरा सुप्रीम कोर्ट रो जज को रिमूव करिया कहले दीटा कंडीशन हमें कहितले कोन
ना proved misbehavior or incapacity. Okay, proved misbehavior or incapacity. Okay, proved misbehavior आउ incapacity तुम बाहर करि परिबो. Okay, तापरे हमर कोन होची the salary of the judge are charged on the consolidated fund of India to which legislature does not have to vote. ठीक अछि the salary and allowance of the Supreme Court judge तो एटा कोठु आसे ना consolidated fund of India रो जोथिरे हमरो it should not be subjected to the vote of parliament. तो एटा हमरो ठीक अछि. Appoint all the appointment of the officer and staff of the Supreme Court are made by the government only after consulting the Chief Justice. No. तो ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर और स्टाफ किए करे ना सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस निजे करंती जेमती हमें कहले हाई कोर्ट एसओ तमे देखु जो देखन गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा करछि कि नाही पूरा हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट से निजे नोटिफिकेशन तार प्रोसीजर कोन सेडा से निजे करंती. ओके तो हमर कोन हि जिवो ना 3 ठीक अछि 1 ठीक अछि सो 1 and 3 हि जिवो करेक्ट ओनली ए हि जिवो हमरा करेक्ट आंसर. Okay, next question with reference to the Indian judiciary, consider the following statement. Any retired judge of the Supreme Court can be uh, called back to seat and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India. Second statement, a High Court in India has the power to review its own judgment in the Supreme Court does. कौन हबो? Guys, I will back in 1 minute. ओके ताडा रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ठीक अछि. ओके तो बोथ हमरा ठीक अछि. ओके retired judge of the Supreme Court can call back to seat and act as a Supreme Court judge by Chief Justice with prior permission to President. ठीक अछि. High Court has the power to review its own judgment. एटा भी हमरा ठीक अछि. तो हमरा both are correct. C is हमरा correct answer. Original jurisdiction of the Supreme Court रे कोड हमरा included. Original jurisdiction of the Supreme Court. तो original jurisdiction of Supreme Court कोडा ना जो केस रे जदि सेंटर स्टेट भीतर किछि डिस्प्यूट हला कि स्टेट भीतर किछि डिस्प्यूट हला सेगुडा को ओरिजिनल जुरिडिक्शन आसंती. ओके सो ए डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वन और मोर स्टेट एटा ठीक अछि. डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट ठीक अछि. तो ए केस रे हमरा ओरिजिनल जुरिडिक्शन हमरा आसे.
ओके तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन माने कोन एई भलिया केस गुडाक केवल सुप्रीम कोर्ट शुणानी करि परिबा आ के नै जदि सेंटर आ स्टेट भितर किछि डिस्प्यूट होउछि किबा स्टेट स्टेट भितर किछि डिस्प्यूट होउछि से गुडाक हमर केवल सुप्रीम कोर्ट रे हमर शुणानी हे परिबो सो ओरिजिनल जुरिडिक्शन माने रखिबो ओपीएससी यूपीएससी रे पढितला ए डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन वन and one or more state second है dispute between two or more state ओके तो ये दीटा हमर तो आंसर कौन है सी है हमर करेक्ट आंसर ये जो सेकंड टा देछि डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर एटा आसुनी तार डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटोरियल गवर्नमेंट भितर एटा नुहे ओके तो ध्यान से जो पढ़िबो क्वेश्चन तो आंसर होछि 1 and 4 66 ओके 66 हमरा कोन ना sorry 76 होचे हमरा constitutional act may be declared unconstitutional by the Supreme Court of India if establish a three-tier federal structure in place of two-tier, remove right to equality before law from part 3 and place it anywhere else in the constitution, replace parliamentary system of executive with presidential one, establish a federal court of appeal to lighten the burden of the Supreme Court. कौन है जो हमारा आंसर तो जोड़ा हमरो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमरो वायोलेशन करूचे कोटा ना हमरो फंडामेंटल राइट ता बेसिक स्ट्रक्चर आसुचे तो यदि फंडामेंटल राइट को तमे रिमूव करूच तो डेफिनेटली एटा हमरो कोन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हे जिवो तो आंसर कोन हबो 76 बी हे जिवो जेहेतु हमरो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काहे कि ना पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमरो एटा बेसिक स्ट्रक्चर आसुचे जोटा कि फंडामेंटल राइट अगेंस्ट तमे किछ एमती लॉ नहीं कि आसी परिबनी ओके तो 76 हमरा कोन हबो ना रिमूव द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ फ्रॉम द पार्ट 3 एंड प्लेस इट एनीवेयर एल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन सो बी इज द करेक्ट आंसर ओके Okay, consider the following. The Supreme Court of India tender advice to the President of India on matter of law or fact. तो को केस रे सुप्रीम कोर्ट हमरो प्रेसिडेंट को एडवाइस दियंती तो प्रथम तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट जो एडवाइस मागंती सुप्रीम कोर्ट को केते नंबर आर्टिकल रे एटा परीक्षा रे पढितला मन रखिबो 143 तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जोथरे कि प्रेसिडेंट हमरो मागंती ओके सो केतेबेले हमर सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देबे प्रेसिडेंट को ऑन ए मैटर ऑफ लॉ एंड फैक्ट ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव if he seeks such advice only if the matter related to fundamental right of the citizen तो निज इच्छा रे तो ये दियंती ओके जेतेबेले प्रेसिडेंट मागिबे साले देबे ओके तो वन रॉन्ग अछि ओके तो कोन होबो ताले आंसर ना ओनली 2 हे जिवो करेक्ट आंसर ओके तो जेतेबेले प्रेसिडेंट तांकर एडवाइस मागिबे सुप्रीम कोर्ट रो सेही केस रे हमरो सुप्रीम कोर्ट तांको एडवाइस देबे अंडर आर्टिकल 143 अच्छा जो एडवाइस ता देबे सेहीटा प्रेसिडेंट मानिया पे बाध्य ना बाध्य नहीं प्रेसिडेंट सेटा मानिया पे बाध्य ना बाध्य नहीं इट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट और नॉट द एडवाइस टेंडर बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट और नॉट मानिया पे बाध्य ना बाध्य नहीं not binding okay not binding on the president
Next question, which one of the following are the discretionary power of the governor of the state? The good governor of the state को पाखरे कौन discretionary power ଅଛି? Sending a report to the president for imposing president rule, appointing minister, reserving certain bill by the state legislature for consideration of the president, making rule to conduct business of the state government. ତାଙ୍କ discretionary power ରେ କୋଉଟା ଆସୁଛି? Appointing the minister এটা কোন ତାଙ୍କ discretionary power? ओके मन इच्छा कौन क्या मिनिस्टर करें नो जे जो गुड़ाक आमर चीफ मिनिस्टर रेकमेंडेशन करेंगे कि मोर होम मिनिस्टर किए हम मो एजुकेशन मिनिस्टर किए हम कि मो एग्रीकल्चर मिनिस्टर किए हम तो से गुड़ाक ही अपॉइंटमेंट करेंगे ओके तो दुईटा तुम एलिमिनेट कर दिया आंसर बाहर जीव तो फास्ट आमर कौन हो ठीक अच्छी तो जो प्रेसिडेंट रूल लगा जाए ओके सेंडिंग ए रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल एटा ठीक अच्छी ओके कारण सेंडिंग ए रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल एटा ठीक अच्छे सेकंड कथा हला अपॉइंटिंग मिनिस्टर एटा रॉन्ग अच्छी रिजर्व सर्टन बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एटा हमरो ठीक अच्छे एटा केते नंबर आर्टिकल जो प्रेसिडेंट करो कंसीडरेशन पे गोटे बिल टे रिजर्व करके रखंती गवर्नर आउ मेकिंग रूल कंडक्ट of the business of the state of government एटा हमारा wrong अछि कारण एटा हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर रिकमेंडेशन हमारा कर ओके केत नंबर आर्टिकल मते कहबा रिजर्वेशन ऑफ बिल 200 ना 201 नेक्स्ट क्वेश्चन the legislative council of the state can be larger than half of the size of the state legislative assembly of that particular state. Governor of the state nominate the chairman of legislative council of that particular state. तो हमारा कौन होगा करेक्ट आंसर 200 ओके वेरी गुड सो आर्टिकल 200 मन रखिबो तो तमे जानि छ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल लो साइज ता इट शुड नॉट बी मैक्स माने 1/3 रु अधिक होबन एठी जो हाफ ऑफ देछि एटा रॉन्ग देछि नॉट हाफ ऑफ दी तो एटा हमर होछि कोन ना नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए पर्टिकुलर धर हमर ओडिशा केस रे हमें कहउछे हम ओडे लेजिस्लेटिव काउंसिल तयारी करिया पे कहउछे ओके 100 हमर 47 टा सीट ओके तार 1/3 माने केते हबो 49 टा ओके तो मैक्सिमम ओडिशा रे जदि विधान परिषद होछि 49 टा सीट हमर रहि परिबो ओके सो 1/3 तापरे गवर्नर ऑफ ए स्टेट नॉमिनेट द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट नो तो गवर्नर नॉमिनेटेड करथिनी हमर तांको धर विधान परिषद रे जो मेंबर माने जाइथिबे तांको भितरु ही जण को हमर से माने इलेक्टेड करथि जेमति हम स्पीकर ऑफ लोकसभा कहले सिमिलरली और स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहले सिमिलर सो गवर्नर ऑफ स्टेट नॉमिनेट द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट तो आंसर कोन हेजबो तो नाइदर हमर हेजबो करेक्ट आंसर ओके डी होचे हमर करेक्ट आंसर ठीक अछि सो 80 रु हमें जो कौन करबा ना नेक्स्ट जो 100 क्वेश्चन जो अछि तो सेटा हमें नेक्स्ट करबा ओके ठीक अछि थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए ग्रेट डे टू ऑल नहीं 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 आज रिजल्ट आज आसी पारे ओके आज रिजल्ट आसी पारे किंबा माने सोमवार सुधा रिजल्ट आसुची ओके
तो ए वर्षर रिजल्ट सोमवार सुधा आसी जीवो आउ तमरो सो बी रेडी कि सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक सुधा तमरो परीक्षा हवार बहुत चांस अछि ओके तो सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक सुधा सेप्टेम्बर 10 गोटे हमर पडुची ओके सेप्टेम्बर 10 गोटे रविवार पडुची मे बी पॉसिबिलिटी तो एबे तो तमरो जो नोटिस तो आसी गलानी तमरो उमास रे एग्जाम हवा 13 तारिख रे ओके तापरे तमरो नेक्स्ट सेप्टेम्बर 10 रे मे बी तमरो प्रीलिम परीक्षा हे सो लास्ट 1 मंथ रिविजन सो जते पारुछ रिविजन करो ओके एबे केते पढिछ डज नॉट मैटर रिविजन करो प्लस तमरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो मॉक टेस्ट सीरीज रो क्वेश्चन गुडा को रिवाइज करो सेटा ही माने तमरा सफिशिएंट जोडा कि प्रीलिम पास करिया पे ओके पूरा टोटल सब पढिया पई टाइम तम पाखरे मे नॉट बी सबुडा पढी कि माने जोडा एबे देखो इफेक्टिव कोन कोन हमरा चैप्टर अछि को थ्रु मैक्सिमम क्वेश्चन आसुची से क्वेश्चन को पढिवा निहाती दरकार ओके ठीक अछि थैंक यू एवरीवन